October ushers in the sugarcane harvest season in the Kolhapur district of Maharashtra. Every year during the harvest, Kolhapur witnesses an influx of landless and small landholding farmers from the Marathwada region of Maharashtra. These seasonal migrants make Kolhapur their temporary homes, working as sugarcane cutters throughout the harvest season, which extends for up to 6 months. Sugarcane cutting is a thankless job. Cutters work for approximately 15 hours a day and are paid as little as Rs 320 per day. The working conditions are harsh, without any health or sanitation facilities in the vicinity. Despite the physically demanding nature of the work, they take it up for lack of a better alternative. खेती करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कहीं पे भी नहीं होता उसका रहने को कुछ हालतच नाही ना. खेती में काय पैसेच नाही. आता हे पाणी दिसते आता आणखीन एक महिन्याने तर काहीच नाही, पाणी प्यायला नाही खालीच. Drought-prone conditions and a lack of irrigation facilities in Marathwada's Beed district prevents farmers from cultivating their lands around the year. This pushes them to migrate for a livelihood. या ज्यादा के कारण अकाल होने के कारण बारिश भी ज्यादा गिरी तो पानी बह के जाता है. तालाब नहीं है, डैम नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. इसकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा होती है और छोटी छोटी गांव लोग हैं जो पहाड़ी बालाघाट पट्टा बोलते हैं इसको. कोई कंपनी में MIDC में काम करता है, कोई मुंबई जाके, कोई गन्ना काटते, कोई दूसरों के खेत में मजदूरी करता है. इससे आगे 1-2 महीने के बाद यहाँ कोई आपको बुढ़े आदमी से ज़्यादा यंग जनरेशन कहीं आपको नहीं मिलेंगे. बच्चे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे छोड़ के और बुढ़े आदमी. Sugarcane is one of the most important cash crops in the country. The harvested cane is taken to sugar mills where it is crushed and separated into sugarcane juice, molasses, filter cake, and bagasse. Sugarcane juice is used to make sugar. Bagasse is used in electricity generation. And filter cake is used as a fertilizer. Molasses, a byproduct of sugarcane, is usually used in ethanol production. Every bit of the byproduct is used. But it takes an intensive amount of water to grow sugarcane. Its growth cycle lasts 12 to 15 months and each kilogram of sugarcane requires about 300 liters of water. Maharashtra is among the leading sugarcane producing states. In 2021 and 22, the state produced about 137 lakh tons of sugar, its highest ever. It produces more sugarcane than countries like Thailand and Australia. The industry also provides a livelihood for nearly 5 crore people in India. मैं अभी 27 साल से शुगर केन फैक्ट्री को देता हूँ. हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करके यील्ड कुछ तो बढ़ता है, लेकिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है, लेबर बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र का रेट तो दुगना हो गया है. लेकिन जिस रेशो में लेबर, फर्टिलाइज़र रेट और बाकी का जो लगता है खर्चा, तो पूरा बढ़ गया है, ऐसा देखने में आ रहा है और हमारा इकोनॉमिक नहीं बैठ रहा. Sugarcane crop offers farmers a guaranteed fair and remunerative price or FRP. This is a price set by the government that sugar mills are mandated to pay farmers when they receive the sugarcane. The money received through FRP helps farmers cover the costs of the cultivation of sugarcane. However, rising prices and the process of disbursal of FRP has raised issues.
शुगर केन का रेट बढ़ना चाहिए, FRP बढ़ना चाहिए। आप FRP तो कम से कम वन टाइम में दीजिए, क्योंकि जो भी हमको साल में लगता है हार्वेस्ट, हमारा क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद 1 महीने के बाद हमको उसका पैसा मिलता है। तब तक जो पूरा पैसा डालना पड़ता है हमको कर्जे से ही पैसा डालना पड़ता है, और उसका बैच वो सब वगैरह देख के है ना, हमारे हाथ में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं। अभी शुरू है रेट, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचता। Unions like the Swabhimani Shetkari Sanghatna and Center of Trade Unions have come out in support of the farmers to improve the FRP process, demand better wages and working conditions. FRP 2 टप्प्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, तो बेकायदेशीर आहे असं मानता त्या सगळ्यांनी हात वर करून या ठरावाला मान्यता द्यावी। The demand for sugarcane is set to increase. In November 2022, the central government approved a higher price for ethanol extracted from sugarcane-based raw materials. This is part of India's plans to increase production of ethanol-blended petrol and reduce its dependence on crude imported oil. This has prompted several sugar factories in Maharashtra to apply for ethanol production licenses. आज बीड़ जिला का पीने का पानी का रेशो देखें हम, हमारे अभी फरवरी के बाद हमारे बीड़ जिला में 600 विलेज को टैंकर से पीने को पानी देना पड़ता है। हमारे आज 9 फैक्ट्री, समझो शुगर फैक्ट्री की 9 फैक्ट्री ने 9 फैक्ट्री ने इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगाया। 600 गांव में जितना टैंकर से पानी पीने को देते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा एक फैक्ट्री को इथेनॉल बनाने के लिए पानी लगेगा। समझो पीने का पानी का रेशियो देखो, इधर 9 फैक्ट्री को, एक फैक्ट्री को मैं बोल रहा हूँ 600 गांव को पानी जब हर दिन पीने को लगता है, उससे 3 गुना ज्यादा इथेनॉल बनाने के लिए एक फैक्ट्री को लगेगा। और ये सब पानी पीने का जो ये समस्या है उसमें हल नहीं हो सकती। हमारे मराठवाड़ा में तो वो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से पानी के रेशियो के हिसाब से जो अपने पास अवेलेबल जो इतना पानी है उतने हिसाब से इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाना ठीक नहीं है। अभी ये मैं बात बोलूँगा तो किसको सही नहीं लगेगी कि इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाना अच्छा है। माननीय नितिन गडकरी साहब अपने मिनिस्टर है, उस खाते के मिनिस्टर हैं, वो भाषण में बोल रहे हैं इथेनॉल लगाना चाहिए, बायो डीजल चलाना चाहिए, बायो वेस्ट से मटेरियल से कुछ करना चाहिए। वो बात सही है उनकी इन्वायरमेंट के लिए, वेस्टेज मटेरियल के लिए, लेकिन उसका पानी का यूज़ तुम कैसा करनी, पानी का डेवलप वाटर मैनेजमेंट उसमें कैसा है, ये सरकार कोई भी अभी तक बताई नहीं है। इथेनॉल कैसे बनाएंगे आप? While the sugarcane industry is booming and profitable for some, it could have adverse impacts on a drought-ridden region.